Good morning, guys. Today we are going to see most important topic is a consumer behavior. What is the consumer behavior? Okay, so activities people undertake when obtaining, consuming, and dispositioning of products and services. It means consumer behavior is mostly work on three things. The first one is obtaining, the second is consuming, and the third one is dispositioning. Okay, so three activities are most important in the consumer behavior. Now, the consumer behavior is most important in the retail market as well as many other things, like as a retail market and retail stores. Everywhere a consumer behavior is most important, and consumer behavior is required market research as well to understand the need and wants of the consumer. Okay, so consumer behavior is the most important in the marketing. Now it is a field of study because we have to understand their attitude, we need to understand their behavior, how what are the different concepts is required to purchase the product by the help of consumer. Okay, what is the effective things in the product, by the help of that consumer purchase this product, like as a packaging or infrastructure. Okay, it's create a specific impact in the mind of customer, and based on that they try to purchase the product. Okay, so what are the different things included in the consumer behavior, we study in further PPTs. Okay, so it is a simple chart of consumer behavior. The first one is obtaining, consuming, and dispositioning. Okay, so first one is obtaining. It means consumer where to buy the products. Okay, so how consumer decide and where to buy this product. Consuming, it means how to use the product. And the third one is dispositioning. I mean, it means how products is disposition or dispositioning and how it's useful for the consumer. Okay, now the consumer influences. So these are the different factors which influence the consumer decision, and these are the different factors which influence the organization decision making. So culture, personality, life stages, income, attitudes, motivation, feeling, knowledge, ethnicity, families, values, all these things impact on decision making on the consumer. Okay, and this is the organization influences: brand, advertising, promotion, price, services. Okay, so these are the influence on the organization decision making at the time of purchase. Now the most important topic is the consumer decision making process. Okay, every person pass from these different 5 stages before purchase the product. So we have a main 5 stages. The first one is the need recognition, the second one is information search, the third one is evaluation of alternative, the fourth one is purchase, and the fifth one is post purchase behavior. Okay, so these 5 stages from which every consumer has to pass. Okay, and these are the different factors: culture, social, individual, and psychological factors which impact on these 5 decision making stages. Okay, so now we try to understand each and every stages in detail. So first is the need recognition. Okay, so need recognition, when is introduced. Okay, so the first, when a current product is not performing properly, at this time a need is recognized. The second one is when the consumer is running out of the product. It means when a new product is coming in the market with the new features. At this time also a need is recognized. The third one, when another product seems superior to the current used. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज मोबाइल इंडस्ट्री में हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है विथ न्यू फीचर्स, विथ लो प्राइजेस. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी नीड कंटिन्यूसली जनरेट होती रहती है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस 3 स्टेप्स नीड इज रिकॉग्नाइज्ड. ओके, नाउ द सेकंड इज the second one is the information search. Okay, so main we have 2 types of information search. The first one is internal search. Internal search, it means the consumer has itself, they have own knowledge about the product. Okay, and consumer use
their own knowledge to purchase the product is known as the internal search. Okay, so it involves the scanning of one's memory to recall previous experience or knowledge. It means जैसे कि हमने हमारे पास कोई प्रोडक्ट, जैसे कि मुझे कार परचेस करनी है, तो मेरे पास ऑलरेडी कार परचेस करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि कार के परचेस करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है. सो माई own knowledge, my own experience is used at the time of purchase the product, so is known as the internal search. Now the second one is external search. The consumer do not have a sufficient information about the product, and for that he or she need external person to purchase the product, or external person is required to get the information about the product to purchase the product. Okay, so for that they collect the information from the outer side people, is known as the external search. Okay, now external search, a most important concept is the reference group. So reference group क्या है? तो रेफरेंस ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे रिलेटिव्स या तो हमारे कलीग्स या तो हमारे पेरेंट्स, हम जब कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम डिसीज़न लेने में वो लोग हमें हेल्प करते हैं. जैसे कि मैं कोई मॉल में गया और वहाँ पर मुझे कोई चीज़ परचेस करनी है, ठीक है, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया हुआ है, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई ये शर्ट मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है, तो वो मुझे डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इट्स दी रेफरेंस ग्रुप. ओके, परचेजिंग डिसीजन में कोई हेल्प कर रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा इज द एक्सटर्नल रेफरेंस ग्रुप, एंड इट्स नॉन एज द एक्सटर्नल सर्च. नाउ एक्सटर्नल सर्च विच कंटेन अ डिफरेंट 3 sources. The first one is personal sources. Personal sources which include a reference group. Okay, friends, family, our relatives or close friends, okay, our colleagues include in the personal sources which gives their own suggestion to purchase the product. Now the second one is public sources. पब्लिक सोर्सेज आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग जब ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मैं Amazon.com में परचेस करने के लिए गया चीज़, ठीक है, मुझे कोई मोबाइल पसंद आ गया, ठीक है, तो उसके नीचे हमें फीडबैक दिखता है कि कस्टमर के फीडबैक कैसा है, ठीक है. सो इट इज़ वन टाइप ऑफ पब्लिक सोर्सेज. वी यूज़ एडवाइस ऑफ एक्सटर्नल पब्लिक, ठीक है, और उसके बेस पे हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज द पर्सनल पब्लिक सोर्सेज. ओके, रेटिंग सर्विसेज लाइक अ कंज्यूमर रिपोर्ट्स, ठीक है. नाउ a market dominated sources, it means advertising and many other things include in the market dominated sources, ठीक है. एडवर्टाइजिंग और सेल्स पीपल विच प्रोवाइड्स वो प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज द मार्केट डोमिनेटेड, और जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज द एक्सटर्नल सर्च. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द evoked set. Now we try to understand what is the meaning of evoked set. A group of brands from which the buyer can choose, ठीक है. We have a number of brands and from which we select the specific brand. Okay, now the next one is the evaluation of alternative. It means मुझे कुछ पसंद आ गया, जैसे कि मुझे मोबाइल पसंद आया, ठीक है, तो मुझे पसंद आया सैमसंग का मोबाइल. नाउ वी हैव मैनी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स लाइक एज अ माइक्रोमैक्स, एप्पल एंड मैनी अदर मोबाइल्स अवेलेबल इन द मार्केट इज नॉन एज द अल्टरनेटिव. ओके, कोई एक चीज़ की और मैं कितनी चीज़ें परचेज कर सकता हूँ, उसको मैं बोलूँगा इज द अल्टरनेटिव. सो इवेल्यूशन ऑफ दिस products is known as the evaluation of alternatives. Now the next one is the purchase. So purchase हम लोग देखेंगे कि परचेज में किस तरीके से होता है. Now what are the factors affecting the consumer purchasing behavior? Okay, so we have many different factors and जो हमें purchasing decision में impact करता है, ठीक है. So first one is the demographic factor. It means which include age, gender, income and many other things to take the decision to purchase the product. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हेरिडिटी एंड होम एनवायरनमेंट. जैसे कि हमारी फैमिली में हेरिडिटी मीन्स आपके फादर को स्पेसिफिक मोबाइल पसंद आता है, तो मे बी आपके हेरिडिटी में भी आएगा कि आपको भी एक लेवल की चीज़ ही पसंद आएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज़ द हेरिडिटी और होम एनवायरनमेंट. कितनी फैमिलीज़ में मॉडर्न चीज़ें परचेज किया जाता है और कितनी फैमिलीज़ में कोई भी चीज़ जो हमारी सिर्फ नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं वो हम परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज़ द स्पेसिफिक होम एनवायरनमेंट,
ठीक है, फैमिली लाइफ साइकिल, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड सिचुएशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट को परचेज करने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंट रोल्स ऑफ बायर एट द टाइम ऑफ decision, at the time of purchase decision. Okay, so we have a main 5 types of roles of buyers. The first one is the initiator. Now what is the meaning of initiator? So the person who first suggest or think of the idea of buying a particular product or services. It means a person who initiate the need of the product. ओके, उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर इट मीन्स हम सेकेंड या तो अनदर वर्ड में उसको बोलेंगे इज द रेफरेंस ग्रुप. ठीक है, अ पर्सन वोज व्यू और एडवाइस कैरी वेट इन मेकिंग फाइनल बाइंग डिसीजन. यानी कि कोई बंदा ऐसा, अ पर्सन वोज एडवाइस इज प्रिफरेबल टू परचेज दिस प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लुएंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसाइडर. द पर्सन वो अल्टीमेटली मेक द फाइनल बाइंग डिसीजन. जैसे कि हम लोग परचेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मुझे पसंद आई चीज़, ओके, बट फाइनल डिसीजन कौन लेता है? हमारे फैमिली मेंबर्स या तो हमारे फादर्स या तो मदर. ठीक है, तो जो फाइनल परचेज करने का डिसीजन जो लेता है उसको हम लोग बोलेंगे इज द डिसाइडर. नाउ द बायर, द पर्सन who makes the actual purchase और एक्चुअल परचेज. इट मीन्स बंदा जो एक्चुअल में चीज परचेस करता है उसको हम लोग बोलेंगे इज द बायर. एंड यूजर, इट मीन्स द पर्सन वो एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे यूजर. ओके, सो वी हैव अ डिफरेंट 5 रोल्स ऑफ बायर एट द टाइम ऑफ purchasing or at the time of decision making. Okay, so these are the different 5 roles of the buyer. Now the next, okay, level of involvements. Level of involvement at the purchasing decision. Okay, so we have I mean 3 types of levels. The first one is extensive, the second one is limited, and the third one is routine. Okay, so the first one is extensive. So problem solving occur when a buyer purchase a more expensive, less frequently purchased product in unfamiliar product category. It means product is very costly and consumer do not have a sufficient information about the product. At this time, the level of involvement to purchase the product is the extensive, because the product is very costly and customer do not have a sufficient information about it. So consumer give a more focus, give a more involvement to purchase this product. Okay, now the next one is limited. Limited, it means problem solving occur when buyers are confronted with unfamiliar brand in the फेमिलियर प्रोडक्ट कैटेगरीज. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मुझे मोबाइल परचेज़ करना है. ठीक है, तो ठीक है कि मुझे मोबाइल के बारे में सब कुछ पता है, बट मेरे पास अभी सैमसंग का मोबाइल है, मैं सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ. अब मुझे माइक्रोमैक्स का मोबाइल यूज़ करना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है मगर ब्रांड डिफरेंट हो गई जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है. सो उस टाइम पे कंज्यूमर जो भी इन्वॉल्वमेंट देता है उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में पता है बट ब्रांड के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है. ठीक है, तो तब जो भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इज द लिमिटेड involvement. And a routine involvement, the product is very cheaper and is a routine based or frequently buying products. ठीक है, जैसे कि मिल्क, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम मिल्क लेने जाए तो हर बार मिल्क की जो पाउच होता है हम उसको देखते हैं. ठीक है, इट्स द डेली रूटीन परचेज प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी चीपर. सो हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते. सो इट्स उस टाइम पे जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट दिखाता है उसको हम लोग बोलेंगे इज द रूटीन इन्वॉल्वमेंट. Now, so it is a difference. We have a main 5 criteria, and based on that we differentiate these 3 involvement of consumer at the time of decision making. Okay, so first one is the involvement. So routine in which consumer give a short involvement, limited में low to moderate involvement, and extensive high involvement because the product is very costly. Now time. In routine is the low time, limited a short to moderate time is required, extensive is the long time is required. Cost. Now routine,
very short, very less cost is required, because they do not have to spend more time to purchase this product, because they have a sufficient information about the product and it's very cheaper. So consumer do not spend more time to purchase this product. Limited, low to moderate, and extensive, the costing is very high, because they spend more time on getting the information about the product, and many other things. They have to ask many friends, they have to visit a large number of retail stores to purchase this product. Okay, so that's why the costing is very high. Information search. Routine, internal only, because consumer has a sufficient information, and this information is used to take the decision to purchase the product. Limited, mostly internal and extensive, internal and external, and mostly in extensive consumer use external information search. And a number of alternatives. So routine, they have one alternatives, whereas the limited, they have a few alternatives, and extensive, they have many alternatives. Now next, the last is a post-purchase behavior is the last step, or to purchase the product, or to decision making process, they have a last step. So it is the most important step, because which creates the loyalty, which creates the value, which creates the image in the mind of customer, and जिसकी वजह से मार्केट में हमारी बहुत ही अच्छी इमेज हो सकती है, which contain different things like as a warranty, guarantee, follow-up, effective communication, advertising, and many other different things, which helps to for post-purchase behavior, because which create the loyalty level in the behavior of consumer. Okay, जब हम लोग उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो सेकेंड टाइम हमारी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्विच कर देंगे कोई दूसरी ब्रांड की तरफ. ठीक है, तो पोस्ट परचेज बिहेवियर मार्केटिंग में बहुत ही स्पेसिफिक गिना जाता है, क्योंकि उससे हम लोग नए कस्टमर भी बना सकते हैं, और हमें इससे इमेज भी बना सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स की, और ब्रांड बना सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में अच्छी तरीके से. ठीक है, now the next one is consumer behavior, mostly working on these three things. Okay, STP. Now what is S? Is stand for the segmentation, T is the targeting, and P is the positioning. So mostly marketing is work on these three concepts. Okay, so one by one we try to understand each and every things in detail. Okay, so first one is the segmentation. Now what is the meaning of segmentation? So dividing the market based on a similar characteristics such as a need or behavior. Okay, जैसे कि हमारे पास पूरा इंडिया है, उसमें से हमने सेगमेंटेशन किया, जैसे कि एक गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड वन इज दी पंजाब, चंडीगढ़, एंड मैनी अदर डिफरेंट स्टेट्स वी हैव. ओके, सो हम लोगों ने उसको किस तरीके से सेगमेंटेशन किया? सो बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन द नीड्स एंड वांट्स. ओके, सो उसको हम लोग बोलेंगे इज द मार्केट सेगमेंटेशन. पूरा मार्केट है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं. नाउ advantages of segmentation. What are the different advantages? Why we adopt this concept? Okay, so it provide a good service to customer, because we try to touch each and every customer in the market. Okay, that's why we provide the good service to the customer, the helping it to clarify its own positioning strategy. The third one, limited resources are used to best advantage and targeted at those segments that offer the best potential. The fourth advantage of segmentation is work properly toward the organization objective. The fifth one is easily manage value and image in the market, which we have covered in a previous slide. And the sixth one is understand need of local customer and increase the market share and profit, and easily prepare marketing strategy to attract the local consumer. Okay, so these are the different advantages of segmentation.
Now, a level of market segmentation. Okay, so it is the most important thing. We have a main 4 types of levels. The first one is known as the segment marketing. The second one is known as the niche marketing. The third one is local marketing, and the fourth one is individual marketing. Now, we try to understand each and everything in detail. The first is the segment marketing. Consists of a group of consumer who share a similar set of needs and wants. Identify the group within a market with similars. Okay, so आगे जो मैंने बताया कि जो कस्टमर की नीड सेम होगी, जिनकी वांट सेम होगी, जिनके बिहेवियर सेम है, जिनके एटीट्यूड सेम है, उसके बेस पे, या तो जिनकी एज सेम है, ओके, सो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और वहाँ पर हम उनको फोकस करेंगे टू सेल अवर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो wants, purchasing power, geographical location and buying attitudes are required for that. Now, a niche marketing, जैसे कि बहुत बड़ा सेगमेंटेशन है हमारे पास, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जब, तो उसको हम लोग बोलेंगे इज दी निक मार्केटिंग. ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद को हम लोग जब सेगमेंटेशन करेंगे तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक प्रहलाद नगर, सेकेंड इज द सैटेलाइट, थर्ड वन इज द जोधपुर. ओके, सो उसको हम लोग बोलेंगे इज दी निक मार्केटिंग. ब्रॉड मार्केट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मार्केट्स इज नॉन एज दी niche marketing. Okay, so group of customers seeking a distinctive mix of benefits who are ready to pay extra premium. Okay, so these are the different what we can say that different things is required for the niche marketing. Okay, now the third one is a local marketing. Now, what are the different things included in the local marketing? So the first, a marketing program tailored to need and wants of the local customer. It means in this marketing organization focus on the local customer only. They try to understand their local needs and local wants, and based on that organization target to the local customer to purchase their product. Okay, just for example, and it's also known as the grassroots marketing also. And the best example, Nike. Okay, Nike company use local marketing concept to sell their products because they need to understand the need of local customer, and that's why Nike use a grassroots marketing or local marketing concept. Okay, and the last one is the individual marketing. Okay, so individual marketing, it means organization focus each and every customer and try to understand their need and wants. Okay, so every customer is known as the segment because every customer is one segment for the organization. Okay, मोस्टली पेंट कंपनीज यूज दिस स्ट्रेटेजी. जैसे कि हमने देखा होगा कि एशियन पेंट, ठीक है, आपके घर पे येलो कलर आपको करवाना है तो आप वहाँ पर जाके शॉप में जाके आप बोलते हो कि भाई मुझे येलो कलर चाहिए. ठीक है, तो येलो कलर वो आपको दे देता है. सो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द प्रोडक्ट इज नॉन एज द इंडिविजुअल मार्केटिंग एंड इज ऑल्सो नॉन एज द कस्टमाइज मार्केटिंग or one-to-one marketing. Okay, now target market. A market is a set of all actual and potential buyers. It means consumer who purchase the product in a shorter time duration. Okay, and based on that organization focus on those number of customers because they purchase the product within a very short time duration. That's why they will prospective customer for the organization. So it's known as the target market. जो कस्टमर बहुत ही शॉर्ट टाइम में परचेस करने वाला है प्रोडक्ट, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको ही टारगेट करेंगे टू सेल दैट प्रोडक्ट्स. ओके, now these are the different 3 things which you use for targeting the market. Okay, so market size and growth, segment structure, attractiveness, and company objectives and resources. These 3 things use to target the market. And the last one is a positioning, is not in the PPT. So positioning, it means a spontaneous signal in the mind of consumer based on their unique features in the product. ठीक है, जो एक यूनिक इमेज क्रिएट करता है, जो ब्रांड बनाता है. प्रोडक्ट में से ब्रांड कैसे बनता है, तो बेस्ड ऑन दी पोजीशनिंग. ठीक है, और जिससे वैल्यू क्रिएट होता है मार्केट में और प्रोडक्ट का सेल्स ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन
consumer market. So we have a main 4 types of segmentation. The first one is geographic segmentation, demographic segmentation, psychographic segmentation, and behavioral segmentation. So we try to understand each and every segmentation in detail. So geographic segmentation, it means based on the location, based on the places, based on the climate, based on the state, based on the density, based on the world or population, we divide the market. Okay, we divide the market is known as the geographic segmentation. Okay, now the second one is demographic segmentation. Demographic segmentation, which include age, gender, it means sex, it means male, female. Okay, income, based on the income we also divide the market or we divide the customers. Okay, and life cycle, the fourth one is the life cycle. Now the third one is the psychographic segmentation. Psychographic segmentation, which contain a life cycle, social classes and personality. Okay, so based on that we divide the market. Okay, and the last one is behavioral segmentation, and which contain a benefit, occasion and uses. Based on that we can say that we divide the consumer or we divide the market and target to the customer based on this behavioral attitude or behavioral segmentation. Okay, and this is the important thing, and thank you so much.